say what is the voltage across PN junction diode in the experiment of forward bias characteristics of PN junction diode? क्या सर? What is the voltage across the diode? Why we are connecting series resistor with the diode? ठीक है, बंद कर दो माइक और वीडियो बंद कर दो. रोल नंबर 5. रोल नंबर 5. रोल नंबर 5. 5 नहीं है. 5 नहीं है सर, नहीं है सर. हाँ, सर डायरेक्ट 11. हाँ, रोल नंबर 11. रोल नंबर 11 आ जाओ. यस सर. मेक योर वीडियो एंड माइक ऑन. यस सर. Kodkar Hussain, I am asking you question. What is the voltage across the PN junction diode in the experiment? Sir, 7.7. 0.7. Okay, very good. And we are getting current in what range in forward bias experiment? 0.6 to 0.7 ampere. Okay, ठीक है. Now roll number 31. सर लीव करने का क्या? हाँ, ये लोग फर्स्ट ग्रुप के बच्चे थे. फर्स्ट ग्रुप का अगर आपका मैनुअल्स कंप्लीट नहीं है तो मैनुअल कंप्लीट करके अपलोड कर दो. अभी सेकेंड ग्रुप का टेस्ट हो रहा है. 31. रोल नंबर 31. रोल नंबर 32. Yes, sir. अनम्यूट वीडियो और माइक ऑन करो. व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड इन द एक्सपेरिमेंट? 0.7. 0.7. How to find static resistance in the experiment? How to find static resistance in the experiment PN junction diode? Okay. Roll number 33. Roll number 33. Roll number 33. Roll number 34. Yes, sir. Yes. Video or mic on करो. In PN junction diode experiment, what is the formula for static resistance? VF upon IF. What is the formula for dynamic resistance in PN junction diode experiment? VR upon IR. ओके, ठीक है. माइक और वीडियो बंद करो. रोल नंबर 35. रोल नंबर 36. रोल नंबर 36. रोल नंबर 37. रोल नंबर 37. Yes, sir. हाँ, सुहास रेवत सर, वीडियो एंड माइक यू मेक इट ऑन. Video and mic you make it on. Okay. What is the formula for static resistance? PR IR. We get current in what range in PN junction diode as forward bias? We get the current in which range? Yes, sir. Current we get in what range? Microampere, milliampere, ampere in PN junction diode as forward bias. Okay, roll number 38. Yes, sir. In PN junction diode as forward bias, we get the current in which range? 0.7, sir. 0.7. In current we get in milliampere, microampere or ampere? In PN junction diode as forward bias, we get the current in ampere, microampere or milliampere? Sir, microampere. Microampere.
Okay. Roll number 39. Hello, sir. What is the use of series resistor in PN junction diode as forward bias? Semiconductor, sir. What is the use of series resistor What is the use of resistance? in PN Uh, junction diode as forward bias? PN junction, sir. What is the formula for dynamic resistance of the PN junction diode? R is equal to V upon I. Dynamic resistance. Dynamic, sir, you. Okay, roll number 40. Roll number 40. Yusuf Sayyed. Yes. Yes, What sir. is the Yes, sir. formula for static resistance in the PN junction diode experiment? Yes, sir. What is the formula for static resistance in the PN junction diode experiment? Sir, V upon R. I sir, sir. Okay. What is the formula for dynamic resistance in PN junction diode experiment? Sir, V is equal to, sorry, sir. R is equal to, Okay. Next student 41. अभी 41 से 50 रेडी हो जाओ. रोल नंबर 41. Yes, sir. यस. आपका एक्सपेरिमेंट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. What is the critical angle we get in the experiment? What, sir? What is the value of critical angle we get in the experiment? Uh, critical angle. Uh, the critical angle so the critical angle deviation. So the critical angle is different. In the practical, how much we are getting critical angle? Uh, Okay, unmute करो. Roll number 35. Roll number 35. Roll number 35. सर 35 या 45? 35 का एग्जाम नहीं हुआ है. 35 है. ओके चैट बॉक्स में लिखा है उन्होंने. यस सर, यस सर, वीडियो और माइक ऑन करो. यस सर. sir 34 भी है. 34 भी है. ठीक. 34 का तो हो गया है. 35 का मैं बोल रहा हूँ अभी. अभी 35 को एक्सपेरिमेंट है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड? V is equal to resistance upon current. What is the formula for dynamic resistance of the diode? R is equal to V upon current. Okay. Voltage upon current. Okay, ठीक है. अभी रोल नंबर 41. 41. मेरा भी आ जय गया. राठौड़ आपका हो गया. अभी 41 का मैं ले रहा हूँ. आतिफ, आई एम टेकिंग द एग्जाम ऑफ आतिफ शाह अप टू 40. आतिफ शाह आपका भी. आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड? Sorry, I am asking you what is the formula for refractive index in the experiment? What is the formula of Refractive index in the refractive experiment. How we are finding refractive index in the experiment? Sir, n is n is equals to C upon V. Okay, next student 42. Yes, sir. In the experiment of TIR, how we are finding refractive index? Sorry, sir. In the experiment of total internal reflection, how we are finding refractive index? Sir. The internal
N1 N2 is equals to N1 N2 is equals to the sine R sine 1. How we are finding critical angle in the experiment of TIR? Sine theta is equals to N2 N1. Okay. Roll number 43. Yes, sir. Yes, unmute yourself, video on, make your video on and make your mic on. Yes, sir. In the experiment of TIR, how we are finding refractive index of the glass slab? सर सर इसका वो है 1.5 डिग्री How we 1.5 are, डिग्री वो है, लेकिन how we are finding refractive index in the experiment? सर क्या मतलब सुनाएंगे क्या? Roll number 43, how we are finding critical angle in the experiment? सर 42 डिग्री. Okay, roll number 44. Yes, sir. Unmute करो, unmute your video and mic. In the experiment of TIR, how we are finding refractive index of the glass slab? ये सर वापिस बोलो सर. In the experiment of total internal reflection, how we are finding refractive index of the glass slab? Sir 90 degree. Angle of reflection. How we are performing the experiment on TIR? सर वापिस बोलो सर. How क्या बोले सर? How we are performing the experiment to find refractive index using TIR? Sir 42 degree. Okay, roll mute हो जा. Roll number 45. Yes, sir. Video और mic को on करो. In the experiment of TIR, how we are finding refractive index of the glass slab? 1.5. How we are finding it? What formula we are putting? What, sir? What formula we are using to find refractive index of glass slab? U is equal to 1 upon sin C. Okay. What is the critical angle we find in the experiment? What value of critical angle we get? 42 degree. 42 degree. Okay, very good. Next, for roll number 46. Yes, sir. What is the formula we are using to find refractive index of the glass slab in the experiment? 1 upon sin C. What is the value of refractive index we get of the glass slab? 42 degree. What is the value of refractive index of the glass we get in the experiment of TIR? 1.5. Okay. Roll number 47. Roll number 47. Yes, sir. Unmute video on करो, mic on करो. In the TIR experiment, what is the formula for refractive index? Sir, 40. 1 upon sin C. How we are finding what is the value of critical angle in the experiment? Value of critical angle of the 42 glass. degree, sir. 42 degree. Okay. Next student, that is 48. Roll number 48. Hello sir. हाँ, आप बताओ कि माइक और वीडियो ऑन करो. सर मेरा नहीं है सर. मैं पूछ रहा हूँ सर जिसका ओरल हो गया लेफ्ट होने का है. ये लेफ्ट नहीं होना है, लेफ्ट नहीं होना है. 48 कौन है? ओके, 49. Who is Yes, sir. 49? Sheikh Ehsan. Yes, sir. What is, how we are finding the critical angle in the experiment by using the glass slab? सर वो इंसिडेंट रे जब ये इंसिडेंट रे जब पास होगा तो हमको मिलेगा वो क्रिटिकल एंगल.
What is the value of critical angle in the experiment of TIR? 42 degree. 42 degree. Okay. That is next student, roll number 50. Yes, sir. Unmute karo. Unmute yourself. Unmute in the video. How we are performing the experiment of TIR? How we find the critical angle and refractive index? Sir, first of all, we place a glass slab and outline it, and then we put a pin in below the glass and see where the pin disappears, and then we point that angle and find that. How we are finding refractive index? Sorry, sir. How we are finding refractive index of glass slab? U is equal to 1 upon sin theta into the critical angle. Okay. And your manual is incomplete. Manual आपको upload करना है, ठीक है? सर कर दिए हैं, आज ही कर दिए. हाँ. Roll number 51. Roll number 51. Roll number 52. Roll number 52. Roll number 53. Sir. Yes. Shahbaz Sheikh. Yes, sir. Please tell me magnetic lines of force experiment. How we are tracing the magnetic lines? Sir. In magnetic lines of force experiment, how we trace the magnetic lines? The material used for magnet, sir. In magnetic lines of force experiment, magnetic lines will start from which pole to which pole? Sir, from North Pole to South Pole, sir. Outside the bar magnet, it will stand from which pole to which pole? North Pole to South Pole, sir. And inside the bar magnet? North Pole to South Pole, sir. Okay, next student, roll number 54. Hello, sir, 51. 51. Yes, sir. Okay. Unmute video on करो, mic on करो. हाँ, sir. Video and mic. Yes. Make your video and mic on. Sir, दोनों on है. लेकिन यहाँ पर तो आपका फोटो नहीं आ रहा है. हाँ. Now, how we are plotting the magnetic lines in magnetic lines of force experiment? Mic video on करो. हाँ, sir. How we are plotting the magnetic lines? Sir, experiment 8 ना? Experiment आपको 8 दिया था. हाँ. हाँ, sir. The material are used for magnetic are hard magnetics materials made from. मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ? मैं प्रोसीजर वगैरह वो सब नहीं पूछ रहा हूँ. आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन फ्रॉम द प्रैक्टिकल. हाउ यू आर प्लॉटिंग द मैग्नेटिक लाइंस? चलो ठीक है. रोल नंबर 52. रोल नंबर 52. ओके. 54. Yes, sir. हाँ. अनम्यूट करो, वीडियो ऑन करो. How we are plotting the magnetic lines in the experiment magnetic lines of force? Outside the bar magnet, magnetic lines is from which pole to which pole? South Pole. Yes, roll number 55. Roll number 55. Roll number 56. Roll number 57. Yes, sir. 57. 57. How we are plotting the magnetic lines using magnetic compass? So we need to place the bar magnet on the paper. We need to take the compass. We need to place the tail on the north pole side. सर और प्लेस करते जाना है जहाँ जहाँ तक उसका
मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ टू साउथ पोल की तरफ जा रहा है, तो पॉइंट प्लेसेस करना है और उसको ड्रॉ करना है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा सर. What is the difference between magnetic lines outside the bar magnet and inside the bar magnet? So magnetic lines outside the force goes from north pole to south pole, and magnetic lines inside the bar magnet, it flows from south pole to north pole. Okay, very good. 56, Siddharth Thakur. Yes, sir. In magnetic compass, what is there? Yes, sir. Inside the magnetic compass, what is there? Sir, I don't know, sir. Inside the bar magnet, magnetic lines is from where to where? Sir, south pole to north pole. Okay. North pole. 58. Roll number 58. Yes, sir. Yes, video on mic on karo. What Yes, is sir. the difference between magnetic lines outside the bar magnet and inside the bar magnet? Sir, outside the magnet bar, north pole to south pole, and inside it, magnet bar is south pole to north pole. Two magnetic lines will intersect or they will not intersect. Sir, pardon? Two magnetic lines will cross or they will not cross. Not cross, sir. Not cross. Okay, very good. 59. Roll number Yes, sir. 59. Yes, sir. Inside the bar magnet, magnetic lines is from which pole to which pole? South to west. North to south. Inside the bar magnet, magnetic lines is from which pole to which pole? North to south, sir. Okay. Roll number 60. Sir, 55. 55, your exam is not over. Okay, mic or video on kara. What is the difference between magnetic lines outside the bar magnet and inside the bar magnet? How we are plotting the magnetic lines of force? Don't know. Inside the bar magnet, magnetic lines is from which direction to which direction? North to south. From which pole to which? Inside the bar magnet. South to north. South to north. Okay. Yes. Anybody exam is left? Roll number 60. Roll number 16. Ajar Ali, unmute karo, video or mic on karo. Yes, sir. What is the difference between magnetic lines outside the bar magnet and inside the bar magnet? Sir, outside the bar magnet, it moves from north to south, and inside the bar magnet, it moves from south to north. South to north. Okay. How we are plotting the magnetic lines of force? So first we have to take a blank page, and on it we have to place a bar magnet. We have to take a outline of bar magnet, and then we have to take magnetic compass. Then we have to take magnetic compass tail from tail on north pole, and we have to mark the point from north to south. Okay. Yes. So now the students exam is over. Mic or video को बंद करो. Our exam is over. Those students whose practical experiments are left to upload, please upload it. अगर आपका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट अपलोड नहीं हुआ है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. तो जिनका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स बाकी है, जैसे रोल नंबर 36 है, 28 है, 26, 33, 40, 52, 50, 19, 20, 24, 47, आप लोग चेक करो. गूगल क्लास वर्क में आप लोग चेक करो. अगर आपका एक्सपेरिमेंट्स इनकम्प्लीट है तो उसको आज के आज ही अपलोड करना है. वीडियो वॉच करो, पूरा उसका एक्सपेरिमेंट लिखो, अपलोड करो और मुझे व्हाट्सएप पे लिखो, आई हैव अपलोडेड द एक्सपेरिमेंट, प्लीज एंटर माय मार्क्स. तो ही आपको मार्क्स मिलेगा. अभी कोई क्वेश्चन है आपको?
सबका एग्जाम हो गया है? अगर कोई फ्रेंड का आपका एग्जाम बचा है तो उनको बोलो मुझे कॉल करने के लिए। ठीक है, तो मैं एग्जाम यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ क्लोज। सबका हो गया है? एनी क्वेश्चन? किसी के पास क्वेश्चन है? सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। तो आपका एग्जाम खत्म हो गया है, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ क्लोज करके। तो मैं बाहर आ रहा हूँ, तो जिसका जिसका प्रैक्टिकल बाकी है वो लोग वीडियो वॉच करो, कंप्लीट करो और अपलोड कर दो। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 14 किया हो, आपने उस पर मार्क्स नहीं दिए हो। ठीक है ठीक है, तो आप मुझे शाम को व्हाट्सएप पे लिखो, मैं उसको ये कर देता हूँ। हाँ ओके सर। ओके, तो मैं अभी बाहर आ रहा हूँ। सर आपले एक्सपेरिमेंट कुठले कुठले बाकी आहे सर? 13 एक्सपेरिमेंट आहे, तुमचे 13 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट पाहिजे. 13 एक्सपेरिमेंट म्हणजे त्याच्या मध्ये सर झालेच नाही ना काही? हा ते तर नाहीये. ओके सर. कैन वी लीव? यस यू कैन लीव. जिनका एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हो गया अपलोड करके अभी माइक्रो प्रोजेक्ट अपलोड कर दो. हेलो सर. हाँ बोलो शोएब, बोलो. सर माइक्रो प्रोजेक्ट में क्या करने का सर? मैंने बताया ना आपको, वो चार्ट पे आपको डायमेंशन का टेबल वगैरह लिखना है, उसको अपलोड कर दो. कौन सा डायमेंशन सर? जो फर्स्ट चैप्टर का है, वर्क का, पावर का, एनर्जी का, वो सब डायमेंशन लिखो और अपलोड कर दो. ठीक है. हेलो सर. हाँ बोलो. सर मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 16 लिखा हूँ, तो सर आपने मार्क्स नहीं दिए मेरे को. ठीक है, मैं अभी चेक करूंगा सबका, और मुझे आप व्हाट्सएप पे लिखे, शाम को मुझे आप व्हाट्सएप पे लिखो जो जो आप... और सर मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 भी लिखा हूँ. चलेगा, आप अगर लिखे हो तो मुझे व्हाट्सएप पे लिखे, शायद लेट लिखा होगा आपने, तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा. हाँ आप मुझे व्हाट्सएप पे लिखेगा, मैं उसको अपडेट कर दूंगा. ठीक है. ओके सर, थैंक यू सर. ओके. हेलो सर. हाँ बोलिए शेख अमान, बोलिए. एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लिखा हो तो आपने उसको मार्क्स नहीं दिए. हाँ मैं चेक करके उसको अपडेट करूंगा, आपको कॉल भी करूंगा. ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे लिखो, व्हाट्सएप पे लिखो, रिमाइंडर दे दो, मैं चेक करके आपको अपडेट कर दूंगा. ओके सर. ओके. हेलो सर. हाँ बोलो शोएब. सर वो माइक्रो प्रोजेक्ट नहीं समझा, कैसा लिखने का? वो एक वाइट पेपर के ऊपर आपको टेबल ड्रॉ करना है, और जो भी आपका एक्सपेरिमेंट्स, जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया गया है उसके बारे में लिख के उसको अपलोड कर दो. ठीक है. और मंडे को अगर क्लास रहता है तो मैं तभी भी समझा दूंगा आपको. अगर जिसका हो गया है सब प्रैक्टिकल वगैरह अपलोड करके वो माइक्रो प्रोजेक्ट करो. ठीक है, तो मैं बाहर आ रहा हूँ क्लास का. हाँ? सबका हो गया है तो मैं बाहर आ रहा हूँ. किसी को क्वेश्चन है? ओके.